Welcome everyone, शिल्पायन लेवल टेस्ट 2026। शिल्पायन के इस लेवल टेस्ट की जो नवीन श्रृंखला 2026 में प्रारंभ की गई है, आज उसकी दूसरी कड़ी यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। दूसरी कड़ी में दो कलाकार हैं। पहली है सुश्री शिवली भट्टाचार्य लेवल 2 और उसके बाद सुश्री प्राप्ति पुराणिक लेवल 3। इससे पहले कि कलाकारों का परिचय दे, उनका सम्मान कराया जाए, मैं श्री हरिनारायण सारडा जी को आमंत्रित करता हूँ। बोलने के लिए थोड़ा सा बोलिए, बोल करके अपना काम कर रहे। कब तक आपको Good evening, my dear students. From my personal experience, which I have to I conveyed to Guruji also. Long back, I had started tuitions with Shubji, my Guruji, that is Shubhankar Ji Dev, and after a long time, I started realizing that I should go back to vocal training and vocal singing. And this is a long time. I think it's a gap of years. And I feel so much disappointed myself that the life is definitely precious. I'm touching 75, and out of that some years I have wasted. There may be excuses that I am busy in so many other activities, business and all that. But the training which I had started with Shubji, and after that I gave my first program also, long back in Dowji complex also. And today, it seems time has gone out of my hands. When time was there, I could have started learning deep, and I would have done more on dance and other things, and it would have gone on deep classical. And if I had done that, maybe today my presentation would have been to a good level of some of the students here, definitely. But this whole instance reflects certain things which I want to bring before you all students. Some of you, there are definitely 200-300 students here, and some they join, some leave, then some come back. So this is for those students who join here and after some time they are deflected away for some or other reasons, whether they were shifted to Bollywood or for other reasons. But any art really requires continuous practice, training and learning. And once you discontinue, it's like climbing on a hill and then you fall back. Again you have to keep on trying to go up. But if you don't try again, you are left on the bottom of the hill. So I would like to share this experience with all of you, all upcoming students of Shilpayan, that no doubt whenever you look back to your institute, you will find that this is one of the best training centers in Indian classical music here, with the right foundation training, and economically also it is very reasonable. You know all very well, and you get lot of bonuses with your finance that you put here in for training, like activities, seminars, and we enjoy so many extra programs. And this
type of level test, these are also like programs where you get to learn, you get to experience, and you get to present yourself. So one thing I can tell you from my experience at this age of 75, and I have joined this, I think maybe around the year of 60. So I am with Shilpa for last 15 years, and I can tell you very blindly to all of you that don't be deflected away by another people, because there are so many people in the industry, teachers also pulling students, misguiding them, and sometimes you feel, oh no, I have done 2 years here, let me try something 1 year somewhere else. After that, when you are unsatisfied, you come back here. By that time, you realize you have gone back, because that other type of training doesn't match the training which has been given here. So the best way is just stick to one place, one guru, one gurukul, and without wasting your time. Just remember two sentences. It is your time, use it or lose it, and time never comes back. It's like the wave, it goes away. So every minute, everything, Guruji always talks about all this, how you waste your time on reels and how you waste your time on other things. I don't want to repeat all that, but I want you to save your time from all other activities. Today, I may give excuses that I have been handling the school and business and all that, but ultimately I have been a loser. I was first impressed with Shilpa when the first book and the first CD came into my hand of Ragini ji, of 32 recordings in Mumbai. And then I realized the dream about Shilpa. I have been taking training from different people in Bombay also, but I never found this type of satisfaction. And with that 32 recordings, which were just 3 minutes, it gave a picture of the whole scenario here, the training, the skill, everything. And that made me a blind follower of Shilpa. And I was fortunate enough, I took not less, but I took 40 turns from Shubji. Shubji used to come to my school, gave me training, and I could sing so many things at that time. If I would have continued all that, maybe I would have been something else. But still, I'll try to be something in 1 year. That is my promise and my respect to Guruji. He knows I've gone back on this training, personal training, and what time has gone from my hands cannot come back. But what time I have, still I have got the full theory that I will utilize that time in the right way and complete some targets of my achievements. Thank you. Let's have a quick review of level test. लेवल टेस्ट में कुल 100 रागों में से 100 रागों की एक लिस्ट दी गई है विद्यार्थियों को। उसमें से जो लेवल 1 देते हैं उनको 10 राग चुनना होता है, लेवल 2 में 20, लेवल 3 में 40 और उसके बाद 80 रागों का चयन करना होता है। लिस्ट दे देते हैं और उसके बाद एक हम लोग का एक तरीका है, यहाँ पे छोटे छोटे चीट बना करके शिवली ने रखे हुए हैं और उन 20 राग, चूँकि वो लेवल 2 है जैसा आप देख रहे हैं, तो उसमें से 20 रागों में से जो भी एक लॉटरी में निकाला जाएगा उसको उसे प्रस्तुत करना होगा कि आगे या तो हम और पूछेंगे या एक और लॉटरी कर लेंगे। इस तरह से इनका भरपूर टेस्ट किया जाएगा कि पूरी तैयारी 20 रागों की है कि नहीं। उसके बाद जिनका 40 रागों का है यानी लेवल 3 का, उनकी भी लगभग यही प्रोसेस रहेगा।
हाँ, एक चीज है कि चूंकि लेवल 2 है तो हम चाहेंगे कि जो पहला वाला राग है वो 20 से 25 मिनट के अंदर ही दिखाना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज पूछनी भी रहती है। केवल एक राग सुन लेने से हमारा काम होगा नहीं, तो वो तो हम लोग अक्सर सुनते हैं। तो अभी हमने प्रयास किया हुआ है कि पहले उन लोगों का करें जो जैसे 12th वाले जो थे, उनका रिजल्ट आने के बाद उनका परफॉर्मेंस हो चुका है, इसलिए उनकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। उन्होंने सभी ने कहा हुआ है कि हम करेंगे, लेवल टेस्ट में भाग लेंगे, लेकिन हमने कहा कि चलो अभी तो थोड़े दिन पहले सुनते हैं, थोड़े दिन बाद सुनते हैं। तो तब तक ये बच्चे हम प्रस्तुत करने आए हैं। शिवली अभी 10th का एग्जाम दे करके 11th में गई है, तो इसका स्वागत करने के लिए मैं साडा जी से अनुरोध करता हूँ कि माल्यार्पण करके हमारे कलाकारों का स्वागत करें। हर बार 2 माला हम लोग जरूर वेस्ट करते हैं। अच्छा, वो शिवली भट्टाचार्य, और उसके बाद तबले पर स्वागत कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय। हारमोनियम पर श्री हर्षित उपाध्याय। तो लीजिए, हमारा लेवल टेस्ट आधिकारिक रूप से प्रारंभ होता है। कड़ी 2 चरण 1, यानी पहला स्टेप जो है शिवली श्रीवास्तव के शिवली भट्टाचार्य के गायन का। आपके सामने बहुत सारे रखे हुए हैं चिट, हम सबको एक एक चिट दे दें। सबको ना कुछ तो खोलना किसको? ये आप दिखा दें। पता तो है नहीं हमको कि किसके पास क्या है। लो, आप लोग बांट लो भाई। देखना मिस ना हो कोई खोलेगा नहीं, कोई खोलेगा नहीं, कोई खोलेगा नहीं एकदम। शिवली किसी एक को बोलेगी कि उसका चिट खोला गया। लॉटरी का थोड़ा दूसरा तरीका है, नया तरीका। यहाँ से लेकर वहां तक पे जिनके पास भी है, किसी एक का नाम ले लो। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, वो पीले टी शर्ट वाले भैया या वो वाली दीदी, यहाँ जिसका ऐसा भी चलेगा। बोलो। कोई बताना मत, धीरे से मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। किसका? इसका? समृद्धि का। चलो, जिन झिंझोटी। वाह, बहुत सुंदर राग आया है, राग झिंझोटी। मेरे ख्याल से सब लोग बहुत खुश हुए। सब लोग अपना चिट संभाल के रखिए।